सिलचर साइरंग रूट पर नई पैसेंजर ट्रेन शुरू, बराघाटी मिजोरम रेल संपर्क मजबूत। सिलचर साइरंग रूट पर नई पैसेंजर ट्रेन सेवा की सोमवार से शुरुआत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद कनाद प्रकाश और सिलचर लोकसभा सांसद परिमल शुक्लवैद्य मौजूद थे। साइरंग स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा, आइजोल विधायक लाल बेचुंगा सहित रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। ट्रेन दोपहर 12:25 पर साइरंग से रवाना होकर 17 स्टेशनों से गुजरते हुए शाम 5:30 बजे सिलचर पहुंची। इसमें 6 जनरल सेकंड क्लास और 1 SLR-D कोच शामिल है। राज्यसभा सांसद कनाद प्रकाश ने इसे मिजोरम और बराघाटी के लिए ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इस सेवा से व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा दैनिक यात्रियों को बड़ी सुविधा होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के रेल नेटवर्क में आए व्यापक बदलावों की सराहना की। Shri Kanad would ask the Honorable MP to give his address. Honorable Minister for Railways, Government of India, Sri Ashwini Vaishnav, Honorable Chief Minister Ji, Honorable MLA Aizol Sri Lal Bhing-Chunga Ji, Honorable MP Sri Parimal Shuklavedya Ji, respected dignitaries and dear passengers. Today marks a truly meaningful moment for the people of Mizoram, Assam, and the entire Bareilly region, with the flagging off of the new Sairang Silchar passenger train and inauguration of new passenger service at Guwahati railway station. I take this opportunity to place on record my deep sense of gratitude to Honorable Minister for Railways, Sri Ashwini Vaishnav Ji, for your prompt initiative to address this public demand for the people of Bareilly and Mizoram. This train connection has long been a real and pressing requirement. Silchar and Sairang are not merely stations on the railway map. They are lifeline of trade, education, healthcare, and social exchange. By connecting these two important nodes, the railway has significantly eased the journey of daily passengers, professionals, businessmen, patients, and common citizens while boosting tourism-related activities, local trade, and allied services. Moreover, I thank Honorable Minister for Railways for providing the new passenger facility under Indian Railways NIFRI scheme equipped with all modern amenities at Guwahati railway station, which adds to a world-class infrastructure and enhanced passenger experience. On behalf of the people of the region, I extend my heartfelt thanks to the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi Ji and Honorable Railway Minister Sri Ashwini Vaishnav Ji for their deep commitment to responsive and people-centric governance by strengthening regional connectivity, which was left neglected before. I am confident that such initiatives will continue to bring the Northeast closer to the rest of the nation, fostering integration, growth, and shared prosperity. Will increase. It will be easier to buy the goods from Silchar, bring them to Mizoram, and also supply the goods manufactured in Mizoram to the market in Silchar. Today, one very interesting facility has been inaugurated at Assam. I hope that will be liked by the people. Overall, if you look at it, Assam को कनेक्टिविटी देने के लिए बहुत सारे, असम और नॉर्थ ईस्ट को कनेक्टिविटी देने के लिए बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और साथ ही साथ कई पुराने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी हुए हैं। इन 11 वर्षों में करीब 1900 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बने हैं। श्रीलंका के टोटल रेल नेटवर्क से ये ज्यादा है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा और मिजोरम, इसमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। आसाम का इलेक्ट्रिफिकेशन 98% हो गया है और बहुत जल्दी 100% हो जाएगा। टोटल 2101 करोड़ के
कॉस्ट से इन्वेस्टमेंट से 60 स्टेशंस को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, रीडेवलप किया जा रहा है। वंदे भारत स्लीपर जो कि बहुत ही एक अच्छी सर्विस है, हाईली अप्रिशिएटेड सर्विस है, इसका इनॉग्रेशन भी आसाम से हुआ। आसाम और कोलकाता को जोड़ने वाली ये ट्रेन है। और अभी हाल ही में बजट में आपने जानकारी होगी कि श्रीमान कनाट पुरकायस्था। Thank you, Deputy Chairman, sir. I rise to draw attention of the government regarding the resumption of Air India services to and from Silchar Airport in Assam. Sir, at present Silchar Airport is served by only a single private airline. This has led to acute shortage of seats, exorbitant airfares during peak periods, frequent overbooking and serious inconvenience to passengers. Silchar is not merely a district headquarters, it is the principal aviation gateway of the entire Barak Valley, serving 3 districts of southern Assam and also catering to passengers from Tripura, Mizoram, Manipur and southern Nagaland. With improved infrastructure, expanding educational and medical institutions and rising economic activity, air traffic demand from this region has increased steadily. The absence of Air India service has reduced competition, making connectivity to major metros such as Delhi, Bengaluru, Chennai, Kolkata and Guwahati both difficult and prohibitively expensive. Air India, as the national carrier, has historically played a vital role in the connecting remote and strategically important regions of the Northeast with the rest of the country. I therefore earnestly urge the government to consider the early resumption of Air India services to Silchar or alternatively the introduction of Air India or Air India Express flights under suitable route rationalization. Such a step will ease passenger hardship, enhance regional connectivity and advance the government's vision of inclusive development of the Northeast. Thank you, sir. Thank you. Honorable members.